Good morning, everyone. Today we are going to discuss about permutation representation of group action. We can discuss about permutation representation of group action. We can take a theorem. Let G be any group and A be any non-empty set, then any homomorphism from G to symmetric group of G2 symmetric group of A defines an action of G on A. Conversely, every action of G on A induces a homomorphism from G to symmetric group of A. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूव करना है कि G जो डिफाइन किया है G टू सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ए ये ग्रुप एक्शन है या नहीं. ओके, लेट साइन इज अ मैपिंग, साइन इज अ होमोमॉर्फिज्म from G to symmetric group of A be any homomorphism. For any G belongs to G, let sign of G equal to sigma of G, where sigma of G is permutation group. What is the permutation group? Permutation group is 1 1 on 2 on itself, right? Sigma G is 1 1 and on 2 from A to B on itself. Okay, since sign is homomorphism, then sign will satisfy this property, sign of G1 equal to sign of G1 sign of G2. Okay, and sign of G1 G2 equal to sigma of G1 G2, sign of G1 G2 equal to sigma of G1 G2 using definitions of sigma of G equal to sign of G equal to sigma of G. Okay, then sign of G1 equal to sign of G1 G2 equal to sign of G1 sign of G2 means sign of G1 equal to sigma of G1 and sign of G2 equal to sigma of G2, right? Define a map star for group action. Star we are mapping G cross A to A. Let G belongs to G and A belongs to A, then G star A equal to sigma G A. ये हमने एक मैप डिफाइन की where G belongs to G and A belongs to A, right? Since first property of group action G1 star G2 star A equal to G1 as it is star G2 star A using definition of group action हमने डिफाइन किया है G स्टार A इक्वल टू सिग्मा जी ए, तो देन G2 स्टार A इक्वल टू सिग्मा G2 A, राइट? ओके, एंड सिग्मा G1 एंड G1 स्टार सिग्मा G2 A इक्वल टू अगेन डेफिनेशन सिग्मा G1 सिग्मा G2 A इक्वल टू सिग्मा ऑफ G1 सिग्मा ऑफ G2 A, sigma of G1 G2 A equal to G1 G2 star of A.
we can write sigma of G1 G2 A equal to G1 G2 star of A using definition of star. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एल एच एस ये था आपका, एंड ये आपका आर एच एस हो गया। ओके, second property, let E belongs to G and A belongs to A, then E star A equal to sigma E A, and sigma E is the identity element of the symmetric group of A, and sigma E A equal to A. We can say sig star is a group action. Okay, this theorem is called a permutation representation of group action. Conversely, suppose G acts on A under the group action star. Define a map sin G to symmetric group of A and sin G equal to sigma G. Okay, where sigma G is a permutation group and sigma G equal to G star A, right? To show that psi is a well defined and 1 1 and on 2. Well defined, हम इमेज एलिमेंट इक्वल लेके चलते हैं और इमेज इक्वल हो जाती है, तो उस केस में आपका वेल डिफाइन। एंड 1 1 इमेज आपने इक्वल लिया एंड एलिमेंट इक्वल प्रूव कर दिया आप लोगों ने, तो सिग्मा या साइन 1 1 एंड ऑन टू सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ए या फिर सिग्मा जी डिफाइन है आपका ए टू ए के प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए डोमेन में आप उसकी प्री इमेज मिल जाती है, तो आपका ऑन टू होता है। ओके, तो सिग्मा जी, नाउ सिग्मा जी ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा जी ऑफ वाई, we can take sigma g x equal to sigma g of y implies sigma g x equal to g star x equal to g star y, right? हमने प्री मल्टीप्लाई किया जी इनवर्स से, तो जी इनवर्स जी स्टार एक्स एंड जी इनवर्स स्टार जी स्टार वाई, जी इनवर्स जी इक्वल टू ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ओके, then x equal to y, we can say sigma g is 1 1. Again, if y belongs to A be any element, y belongs to A be any element, then g inverse belongs to G and y belongs to A, g star g inverse star y belongs to A for G belongs to G. Now sigma g star g inverse star y equal to g star g inverse star y using definition g inverse star y, right? LHS RHS using definition of group action, then g inverse equal to E is the identity element, star y equal to y. Okay, hence sigma g is on to and sigma g belongs to symmetric group of A. Okay, now sigma g1 g2 equal to, sorry, sin g1 g2 equal to sigma g1 g2 and sigma g1 g2 A equal to g1 g2 star of A using definition, and sin of g1 g2, sin of g1 and sin of g2 equal to sigma of g1 g2, means sigma of g1 g2 equal to sigma of g1 and sigma of g2, hence sin is homomorphism, which proves our theorem. Okay, now note
साइन G2 symmetric group of A है, this homomorphism is sometimes called the associated or corresponding permutation representation of the given action. Okay. Thank you.